watch the video at 1.5 to 2x for more convenience. Another तुम्हारी choice है. Anyways, so today's question is going to be blood fill. Oops. Put shortcuts man. सभी काम करेंगे. Anyways, let's read the first question. इंडिया में पैदा हुए भाई, तो उधर तो क्लिक करेगी जीभ. Anyways, what the question is saying, blood fill. So you are in an image represented by m into n grid of integers image, where image ij represent the pixel value of the image. You are also given three images, three integers. SR basically it's like starting row, starting column, and color. Your task is to perform a blood fill on the image starting from pixel image. This basically ये एक starting color है और हम लोग को final color तक ले जाना है. To perform a blood fill, begin with the starting pixel and change its color to color. Perform the same process for each pixel that is directly adjacent pixel that shares a side with the original text. तो अगर यहाँ से एक starting pixel है, इसके adjacent में जितने भी colors होंगे उन सबको लेकिन वो starting color होना चाहिए. अगर 1 के अलावा 0 है, then it wouldn't be changing the starting color into final color because 0 is not starting color. We have got the target color, that is SR and SC, that is starting row and starting column. That would be your starting color, initial color, and your final color would be given this. So we have to change all the adjacent color that are having the same values, that like 1, and we have to return the complete image, that matrix. And we cannot change the number that are not adjacent. टच नहीं करना है बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है. The process stops when there are no more adjacent pixel of the original image to update. And the third part is keep repeating this process by checking neighboring pixel of the updated pixel and modifying their color on it matches the original color of the starting pixel. So we have to return the modified image. So why does it called as a flood fill? Let me show you. Flood fill GIF. So ये वो रीजन है. दिखा दे भाई. ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको फ्लड फिल बोले. इट्स लाइक मोर like a breadth search on the graph. I don't know why it's lagged. Anyways, so this is what इसको करेंगे कैसे, वही जैसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उन्हीं सब की तरह. Solution. So what will be our intuition? हमारा इंट्यूशन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन रहेगा हम BFS परफॉर्म करेंगे, लेकिन दो तरह से हो सकता है. वन इज recursion, second is iterative using queue. तो हम लोग queue से करते हैं, ठीक है अभी के लिए. सो उसके लिए हम लोग इनिशियलाइज करेंगे queue को with starting color, and then we have to perform the BFS using queue. And the third point will be just explore the children's
और उस एक्सप्लोर करते वक्त हम लोग चिल्ड्रंस में हम लोग को we have to find starting or check the pixel or the value of the cell is starting color if cell or children is having same value as starting color, then change into the final color that is given. Okay, and also push the children into queue. That's all we have to do. Okay, so these are the 3 steps we have to perform right now, nothing more than that. So here we go. पता है मुझे हल्का सा जूम करने का मन है, तो ये हो नहीं रहा है अच्छे से। अब अच्छा लग रहा है, isn't that? Yeah. Okay. Battery low है. Okay, so we just have to perform 3 things. पहले हम लोग साइज ले लेते हैं इमेज का। ओके, नाउ साइज ले लिया। अब हम लोग इनिशियलाइज करेंगे क्यू को, फिर स्टार्टिंग कलर, और दूसरा पार्ट रहेगा हमारा BFS यूजिंग क्यू, और तीसरा पार्ट है जो कि एक तरह से एक्चुअल में तीसरा पार्ट नहीं है, बट हाँ, एक्सप्लोर द चिल्ड्रंस। यस, और उसमें हम लोग को 2 चीज़ें करनी है जो कि 3.1 है, चेंज स्टार्टिंग कलर इनटू फाइनल कलर, और दूसरा जो कि हम लोग जानते ही हैं, पुश चिल्ड्रन इनटू क्यू, क्योंकि यही सबसे मेन है। तो अब हम लोग इसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। नाउ वी जस्ट विल डू इट as smooth as we can. Here we go. Okay, so let's define the queue. You can use the tuple as I'm using, but definitely you can also use something else like pairs. It's more convenient for me, so that's why I use it. Now we will push the starting row and starting column, and here's the thing, we have pushed the starting color, starting pixel, so we have to change the starting pixel into the final color also. So यहाँ पे हम लोग इस इमेज को, इस पिक्सल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कलर में, जो हम लोग फाइनल कलर है। और हम लोग का फाइनल स्टार्टिंग कलर क्या होगा, स्टार्टिंग कलर भी तो डिफाइन करना है। स्टार्टिंग कलर डिफाइन होगा यहाँ पे इमेज starting row and then starting color. It's done. Now we have to perform BFS only. So how we will be performing BFS? Using while loop. So we will iterate till the empty of queue. Now take auto, where R and C would be coming from the front of the queue, and then pop it from there. Now explore the children. Yes, explore the children using what method? You know, ये डेल्टा वाला मेथड है वही।
is smaller than 4, then I plus plus. Sorry, yeah, I plus है. And sorry. Okay, where we were. Okay, yeah. वही छोटा हो जाए. ऐसा कुछ. Now we will explore the childrens जो कि new R से लिखते हैं, लेकिन मेरी आदत हो गई अब R लिखने की. Then BT, that is delta actually, and NC plus delta L plus 1. You can define two different vectors, or you can also define the one single vector where it will be iterating from top, right, now bottom, and then left, and then top. So that I plus means में ये refer कर रहा है 0 से लेके -1 तक जाएगा, and that I actually saying -1 से 0 तक जाएगा. Then we have to check the boundary check. NR must be greater than 0, NR also must be smaller than N, NC must be unequal to 0, and must be greater than n equal to 0, and NC must be smaller than N. Now अगर हमारी boundary check हो गई है जैसे कि ये, then we have to check that image, that child row and column must be same as starting color. इसी दिन के लिए तो हम लोगों ने ये डिफाइन किया था, starting color. Then when we found this image, हाँ भाई starting color है, then convert it into the final color and push it into the queue. What to push? Both the childrens, like the row and the column of this thing. यार ये तो कमेंट्स को यूज करना भूल गया, पहले डिफाइन करके रख दिया था. And here we go. So the question is done. It looks like done, but मैं अभी दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे नहीं हुआ है. So now let's submit it. Oops. We have to return the image. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. ये okay. So दिखा दे भाई, दिखा. मेमोरी लिमिट एक्सीड. इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हमारे पास स्टार्टिंग जो रो है, स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम का जो पिक्सल वैल्यू है वो सेम है फाइनल कलर के. तो हम लोग को एक एच केस बनाना पड़ेगा इसके लिए. इसी के लिए मैं तुम्हें बता रहा था कि स्टार्टिंग कलर इज सेम एज कलर, देन रिटर्न. यार अरे अरे हद, अरे क्या भाई कितनी गलती होगी. Here we go. तो ये अब रन कर जाएगा. Now it's done. As you can see, it's the whole code, and there is your note. That's all right now we needed. इतना सा कोड है और हमारे 3 पार्ट में हो जाता है. That's all. Thank you for